YouTube channel Sumant Digital English tutorial videos. Today I have brought another passage to be explained. So let's see on the board. Explain with reference to the context. In ancient times से लेकर के कमिंग टू देयर ओन तक का आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखना है. ये वीमेंस एजुकेशन पाठ की कंक्लूडिंग लाइंस हैं, अर्थात हमें इन पंक्तियों में निष्कर्ष प्राप्त हो जाता है. तो इसका रेफरेंस लिखने के लिए आप यहां से भी शुरू कर सकते हैं. These concluding lines have been taken from, या जो प्रेजेंटली लिखा गया है, this extract has been taken from. तो आपके पास लिबर्टी है, आप लिख सकते हैं the passage given to be explained, फिर has been taken from. The lines that are to be explained have been taken from. तो रेफरेंस देखिए, this extract has been taken from the lesson Women's Education penned by Dr. S. Radhakrishnan, a great philosopher and statesman. तो यह निष्कर्ष वीमेंस एजुकेशन नामक पाठ से लिया गया है, जिसे डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने लिखा है, जो कि एक बहुत बड़े दार्शनिक और राजनीतिज्ञ थे. कॉन्टेक्स्ट देखें. In these lines, the author reveals that the women of our country has been conscious enough to regain their self-pride through the exertions of Mahatma Gandhi after independence. तो इन पंक्तियों में लेखक इस बात का वर्णन करते हैं कि हमारे देश की महिलाएं अपने आत्मगौरव को पुनर्प्राप्त करने के लिए पर्याप्त मात्रा में सचेत हैं, सक्रिय हैं, और ये सब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी के प्रयासों से हुआ है. So let's see its explanation. In fact, there was a time in our country when the women of our country were subjected. They were neglected. In our country, Mughals ruled, Britishers ruled, and they snatched the self-pride of our women. But in the ancient times, during the reign of Aryans, our women were entitled to worship in temples. They were entitled to study the Vedas, as well as they could chant Gayatri Mantra. Even their
उपनयन ceremony was also performed for them. हमारे एक शास्त्रों में लिखा गया है, नार्यास यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। नारियों की उपेक्षा हुई, फिर उनके गौरव के लिए महात्मा गांधी जी ने काम किया। These are to be managed as explanation. So let's see. The author says that there was a time when women were neglected, but our ancient culture had been different. And we worshipped the women of our country as the goddesses. तो लेखक महोदय कहते हैं कि एक समय ऐसा था जब महिलाओं की उपेक्षा की गई, लेकिन हमारी संस्कृति तो इससे अलग रही है और हम देवी के रूप में नारियों की पूजा किए हैं। They were allowed to worship in temples and to study Vedas. उन्हें मंदिर में पूजा करने की अनुमति थी, उन्हें वेदों का अध्ययन करने की अनुमति थी। In the Middle Ages, the Mughals and the British ruled over our country and they subjected our women. मध्यकाल में मुगलों ने और अंग्रेजों ने हमारे देश पे शासन किया और उन्होंने हमारी महिलाओं को पराधीन किया, उनके अधिकारों से उन्हें वंचित किया। They seized them in the closed mess. जैसे उन्होंने हमारे देश की पूजी जाने वाली नारियों को बंदी बना लिया। In the past, the Upnayana ceremony was performed for them. They were entitled to go in temples to worship, as well as they were allowed to chant Gayatri Jap. So let's see what is there in the explanation. The women of our country were entitled to chant Gayatri Mantra in the past. हमारे देश की महिलाओं को प्राचीन काल में गायत्री मंत्र जपने का भी अधिकार था। After the independence, Mahatma Gandhi advocated for the rights of women. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी जी ने नारियों के अधिकारों की वकालत किया, नारियों को उनका अधिकार वापस दिलाने के लिए प्रयास किया। Presently, the women of our country are conscious to regain their lost glory. वर्तमान में हमारे देश की महिलाएं अपने खोए हुए गौरव को पाने के लिए पर्याप्त रूप से सतर्क हैं and displaying excellently in all the fields. और हर क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कर रही हैं। Whether the field is of literature, चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो और साइंस, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो और फिलॉसफी, चाहे वो दर्शन शास्त्र का क्षेत्र हो, कोई सा भी क्षेत्र हो, अंतरिक्ष इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग में, औषधि विज्ञान में, मेडिकल साइंस में, हर क्षेत्र में हमारे देश की स्त्रियां पुरुषों के समक्ष
प्रबल चुनौती प्रस्तुत कर रही हैं। तो डियर गाइस, लेट्स visualize the whole board rapidly. Reference: this extract has been taken from the lesson Women's Education penned by Dr. S. Radhakrishnan, a great philosopher and statesman. Context: in these lines, the author reveals that women of our country has been conscious enough to regain their self-pride through the exertions of Mahatma Gandhi after independence. Explanation: the author says that there was a time when women were neglected, but our culture had been somewhat different in the ancient times, and we worshipped the women as goddesses. They were allowed to worship in temples and to study Vedas. In the Middle Age, the Mughals, the British ruled over our country and they subjected our women. The women of our country were entitled to chant the Gayatri mantra in the past. After independence, Mahatma Gandhi advocated for the rights of women. Presently, the women of our country are conscious to regain their lost glory and displaying excellently in every field such as literature, science, philosophy, etc. So hope you must have enjoyed this video and you must have got some technique to explain any given passage according to your own. Hope you must have liked this. Thanks for watching. Bye.